Assalamu alaikum, class 9, subject English. Today we will do the transition of present perfect tense of negative sentences, and we will do the transition of present perfect tense of active voice. First of all, we will learn what is the identification of this tense in Urdu, यानी कि हम इस टेंस को उर्दू में इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इस टेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अलिफ है, छोटिए है, बड़िए हैं वगैरह आता है। यानी कि इस टेंस को उर्दू में दो तरह से पहचान सकते हैं, चुका है, चुकी है, और अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह से। Here I have given you the formation, means to say we will see which form of verb will be used and which is the helping verb to make the translation of this tense. First of all, we have to use subject, then the helping verb in the shape of has or have. Then we have to use not plus third form of verb plus object. Remember, in all perfect tenses, we have to use third form of verb. As we are doing as we are doing present perfect tense, so in this tense, we have to use has or have as helping verb. First, we use has with third person singular or any singular noun. Third person is he, she, and it. If we use have, then we use have with first person, second person, and third person plural. First person में I और we, second person में you, and third person plural में they include है. इन सब के साथ यानी I, we, you और they के साथ हम have का इस्तेमाल करेंगे. Here I have given you examples so that you can understand easily. Number 1, हमने आपका इंतज़ार नहीं किया है. अलिफ है पे ये जुमला ख़त्म हो रहा है, सो वी कैन से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. वी हैव नॉट वेटेड फॉर यू. हमने आपका इंतज़ार नहीं किया है. वी हैव नॉट वेटेड फॉर यू. नंबर 2, मैंने चाय नहीं पी है. आई हैव नॉट टेकन टी. रिमेंबर वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाय पीना, नाश्ता करना, दवाई खाना या दवाई पीना, वर्जिश करना, लंच करना, इन सब के साथ हम टेक यूज़ करते हैं. वी हैव टू यूज़ टेक as we are doing the present perfect tense, so we have to use the third form of verb of take, that is taken. मैंने चाय नहीं पी है. I have not taken tea. Number 3, प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है. The principal has not closed the school. Okay, we are going to the transition into English of present perfect tense, and we are doing negative sentences, and we are going to do the solved exercise which is given to you in your book. While translating negative sentences, we use not between has or have and the third form of verb as the following sentences show. Number 1, उसने किताब नहीं फाड़ी है. He has not torn the book. किताब फाड़ना, torn the book. Torn is the third form of verb of tear. Tear, tore, torn. Number 2, उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है. उन्होंने, they have not waited for us. Number 3, प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है. The principal has not closed the school. Number 4, हम चाय पी नहीं चुके हैं.
We have not taken tea. Number 5. गाड़ी रवाना नहीं हुई है. रवाना होना की इंग्लिश यहाँ पे started. The train has not started. Number 6. मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है. The mason has not left the work incomplete. मिस्त्री, mason, काम अधूरा छोड़ना, incomplete करना, incomplete work. Okay. Number 7. बादशाह ने ताज नहीं उतारा है. The king has not taken off the crown. ताज को कहते हैं crown और उतारना take off करना. Here third form of verb taken off. Number 8. मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है. The hen has not laid the egg. Number 9. मोर जंगल में नहीं नाचा है. The peacock has not danced in the forest, in the jungle, as you wish, which you want to write. Okay, here I have written more sentences. These all sentences are also included in your book, in your solved exercise. Okay, number 10. सूरज नहीं डूब चुका है. The sun has not set it in. The sun has not set in. Number 11. मरीज ने दवाई नहीं पी है. यहाँ दवाई पीना आगे. We will not use drink medicine or drunk medicine. We have to use taken medicine. Okay. The patient has not taken medicine. Number 12. मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है. मजदूर, मजदूरों की इंग्लिश laborers. हड़ताल strike. हड़ताल करना gone on strike. Okay, the translation of the sentence is the laborers have not gone on strike. Number 13. औरतों ने दुल्हन को नहीं सवारा है. The women have not made up the bride. Made up करना, तैयार करना, सवारना. Number 14. दूल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं. The bridegroom has not put on new clothes. Put on करना, कपड़े पहनना. Take off करना, कपड़े उतारना. Okay. Number 15. छत नहीं गिरी है. The roof has not given way. Now we are going to the translation into English of unsolved exercise. It is also included in your book. It is also written it in your book, but this exercise is unsolved and I have solved this exercise for you, so you can increase your vocabulary, you can understand the concept which I have given to you. Okay, number 1. उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है. उन्होंने, they have not searched for the lost child. गुमशुदा बच्चा, lost child. तलाश करना, searched for. Number 2. आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है. You have not accepted my application. Number 3. अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है. The court has not considered my appeal. Okay, one noticeable thing in the second sentence, we have used application for darkhwast, but here the noticeable thing is over here. जब आप किसी अदालत को दरख्वास्त देते हैं तो वो एप्लीकेशन के तौर पे नहीं, पर इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन वी हैव टू यूज अपील. ओके, गौर करना, कंसिडर करना. द कोर्ट हैज़ नॉट कंसिडर्ड माई अपील.
नंबर 4, उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। He has not trusted his wife. नंबर 5, चौकीदार अपना फ़र्ज अदा नहीं कर चुका है। चौकीदार कहते हैं वॉचमैन को। The watchman has not done his duty. You can write over here like this: the watchman has not fulfilled his duty. Both are correct. Okay. Number 6, तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। All the guests have not arrived. Number 7, खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं। As we are doing the active voice of present perfect tense, but in this sentence we cannot say that it is an active voice because there is no the subject over here. जैसे कि खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हुआ कि किसने मशरूब दिए हैं या किसने मशरूब नहीं दिए हैं। मीन्स टू से यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। So we have to translate this sentence into English as passive voice, not the active voice. For making the passive voice, we have to use has been, have been as helping verb. So we will translate this sentence like this: players have not been served. Sorry, players have not been served the cold drinks. If you will not write been, then the translation of this sentence will be incorrect. Okay. Number 8, कामयाब उम्मीदवारों को असनाद नहीं दी गई हैं। असनाद सर्टिफिकेट्स, कामयाब उम्मीदवार सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. So this sentence is also a passive voice. अब असनाद किसने नहीं दी हैं? We don't know. There is no any subject over here. So we will say that it is a passive voice. The translation of the sentence is like that: the successful candidates have not been given the certificates. Number 9, अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है। किसने हौसला अफजाई नहीं की? We don't know. There is no any subject. So we will translate like this: good players have not been encouraged. It is also a passive voice. That's why we have used have not been. Okay. Number 10, हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है। Our friend has not consulted us. Okay, one thing which I want to explain here: मशवरा लेना, कंसल्ट करना, मशवरा देना, सजेस्ट करना. Example: if we visit a doctor, then we consult the doctor. Then doctor suggest us. Got my point? मीन्स टू से जब आप किसी से मशवरा लेते हैं तो आप कंसल्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर आप किसी को मशवरा देते हैं तो आप सजेस्ट करते हैं. ओके. नंबर 11, सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है. सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है. द सोल्जर हैज़ नॉट obeyed the officer. Number 12, दुश्मन ने हथियार नहीं डाले हैं. The enemy has not let down the arms. Number 13, हमारी फौज ने पसपाई अख्तियार नहीं की है. Our army has not retreated. Number 14, मेरे दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया है. My friends have not let me go. First, second and third form of let is let. Number 15, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है. Police have not caught him red-handed. Okay, I have explained everything. I have given you the vocabulary. And one thing more, we are doing active voice of present perfect tense, but there are some sentences in this exercise which are in passive condition. That's why we have to translate
these sentences into passive condition and which have been written in the active condition, means to say where we find the doer is over here, that will be called the active voice, and where we find there is no any subject in the sentence, then it will be called the passive voice. As you should keep one thing more, keep in your mind that only transitive verb can be converted into passive voice, and intransitive verb cannot be converted into passive voice. So I have given you the vocabulary. I have told you about some difficult meanings that you can write like this, and this word can be used over here like this. And I hope you all will solve this exercise easily. Allah Hafiz.